Good afternoon, students. My name is Piyali and today's first topic we're gonna study with muscular system. Okay. So muscular system. Actually, what muscular is? In Hindi, we said muscular as मांसपेशियां जो हमारे बॉडी में मिलती है. In human, the muscular system play a very important role to maintain maintain our posture, like how and posture and the activities जो हम हमेशा करते हैं सारे activities उस चीज के लिए muscular system बहुत important part होता है और हमारे सारे मसल्स को एक साथ मिलाकर एक मस्कुलर सिस्टम बनाया जाता है. So there are basically three types of muscles in our body. तीन टाइप के मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं. Skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles. हम अलग अलग तरीके से मूव करते हैं with the help of muscles. जैसे कि हमारे फेस में जो जो मसल्स है उसके सहारे हम बात कर सकते हैं और हम स्माइल कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. It's basically a work of muscle. Okay, so you understand what is our muscular system. Okay, now come to circulatory system. Circulatory system, it's playing a very important role to transmitting nutrients. जो हमारे nutrients होते हैं वो सबको सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं थ्रू ब्लड. और सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के लिए काम आते हैं. जो हमारे हार्ट है वो ब्लड पंप करता है हमारी पूरी बॉडी पे विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारे दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज जो ऑक्सीजन कैरी करता है और रिच ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और वेन्स जो होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हमारे हार्ट पे और वो हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड करता है लंग्स पे जिससे वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो. देन हार्ट क्या करता है, वो जो रिच ऑक्सीजन होता है जो हमारा लंग्स ऑक्सीजनेटेड कर देता है हमारे ब्लड को, वही ऑक्सीजन रिच ब्लड के हिसाब से हमारे ऑल ओवर बॉडी पार्ट में ट्रांसफर किया जाता है. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम ऐसा एक पार्ट है बॉडी का जो हमारे इंटरैक्ट करता है हमारे आसपास की चीजों के साथ, जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. ये दोनों चीजें ऐसे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमारे नर्व सिस्टम से स्प्रेड करता है हमारी बॉडी में. अब आते हैं, अब ये है कि व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड. ओके, स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर नर्व सिस्टम. स्पाइनल कॉर्ड, दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, दिस spinal cord is exactly behind is the brain. Spinal cord जो है वो this is a long और बहुत thin bundle of nerve होता है जो एक medulla oblongata से extended है और ये brain stem से vertebral column बनाता है. Which the spinal cord is a very long, thin and bundle which extended from the medulla oblongata. Medulla oblongata presence होता है in this part, this one. There is a brain, there is a spinal cord. Here we found the medulla oblongata. Okay, here. और हमारा जो brain
और स्पाइनल कॉर्ड है, वो दोनों मिला के एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रिएट किया जाता है जो हमारे बॉडी से सिग्नल रिसीव्स और भेजने का काम करता है हमारे बाकी बॉडी में थ्रू नर्व्स. अब नाउ वी कम टू रेस्पिरेटरी सिस्टम. Respiratory system, nasal cavity. Nasal means nose. The part we see, this one is the nasal cavity. Okay. And this is a windpipe, trachea. Windpipe is also called trachea. And this one is lungs. This red pinkish form. This one is the lungs. द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे 3 मेन पार्ट होते हैं, नेजल कैविटी, ट्रैकिया और लंग्स. जब हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं हमारे नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल्स मींस दिस नोज एंड दिस 2 small holes, that's called the nostrils. We breathe in from our nostrils and it goes to the nasal cavity. यहाँ से हम ब्रीथ करने के बाद ये नाजल कैविटी ऊपर वाले पार्ट में चला जाता है एंड फिर वो पूरे हर जगह मूव करता है टू द ट्रैकिया. ट्रैकिया पे, ट्रैकिया, दिस साइड इज द ट्रैकिया एंड देन इट एंटर इनटू द लंग्स और इसको कहते हैं इनहेलेशन. व्हेन वी ब्रीथ इन द एयर, दिस कम फर्स्ट, इट कम्स टू द नॉस्ट्रिल, then it goes to the nasal cavity, then nasal cavity further moves the trachea, then it enter to our lungs. Let's see the picture. Yeah, see, this one is the nostrils. We breathe, then it go to nasal cavity, then it comes to trachea and then lungs. It carries oxygen and this whole process is called inhalations. We take, breathe, nasal cavity, trachea, lungs. This we take, this is called the inhalation process. The lungs diffuse oxygen through the bloodstream into the body and expel carbon dioxide. हमारे lungs जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है फ्रॉम द लंग्स. और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के सहारे ट्रैकिया में जाकर देन द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स lung, first it comes to the lungs, then it goes to trachea and then it expel and releases from the nostril. Okay, this process is called the exhalation. This whole process is called the exhalation. We breathe in from the nostrils, then it goes to the nasal cavity, then it goes to the trachea, then it goes to the lungs. Its whole process is called exhalation. Then first the carbon dioxide is from the lungs, then it goes to the trachea, then it goes and it's released from the nostrils. This process is called exhalation. This whole inhalation and exhalation process is known as respiration. What is called? Respiration. The inhalation process and the exhalation process is called respiration. Have you understand, students? Any doubt on this topic? Should we move ahead or I will repeat? Okay, we will move ahead. Then we come to digestive system. Digestive system, its body requires nutrient. Body require, हम लोगों को बहुत न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है हमारा वर्क प्रॉपर, हम जिससे अच्छे से काम कर सकें. इसी और वो न्यूट्रिएंट हमें कहाँ से मिलता है? जो चीजें हम खाते हैं. The food we eat, okay, the food we eat which broke down to our digestive system. This is mouth. There we eat our food. This is esophagus. This is stomach. This is liver. The inner part is small intestine, and this
light blue color, this is called large intestine. And then the whole and releases it, the last part is rectum. हम जब कोई खाना खाते हैं, when we chew with the help of teeth, food gets broken. Food जो होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, फिर वो सलाइवा के साथ मिक्स होके हमारे स्टोमक में जाते हैं थ्रू ओसोफेगस. ओसोफेगस इज अ विंड पाइप, food pipe. We can say that esophagus is a food pipe. This one is the food pipe, okay? This one, food pipe. Then it in the stomach, they get mixed. Stomach में जाने के बाद, वो mixed होने के बाद, वो digestive juice create करता है, जो हमारे small intestine पे जाता है. फिर उसके बाद वो बहुत जो हमारा body, हमारे जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे बॉडी को सिंपलर फॉर्म में न्यूट्रिएंट और एनर्जी प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइडर्स न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी. जो फूड पार्टिकल्स है वो सिंपलर फॉर्म में एब्सॉर्ब एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये जो ब्रेक this whole process, the food we eat, then it goes to the esophagus, then it goes to the smaller stomach, then it goes to the small intestine. The whole process of breaking food into the small simpler form, this is called digestion. ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन. और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा खाना हमें पचता नहीं है, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. और जो उसी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रो पे हमारे कुछ फूड पार्टिकल्स वो सारे एक्सपेल हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं थ्रू रेक्टम. दिस वन इज रेक्टम. द फूड वी eat from the mouth, then it goes to the esophagus, then this is the liver, this is the stomach. This process is called we eat, then it's food goes to the esophagus, form a digestive juice, then it goes to the small intestine. This process is called what this process is called? Yes, digestion. Then this is the rectum, which the food releases. Some food particle releases. Now, excretory system. What is excretory system? Excretory system mainly consists about kidney, uterus, urinary bladder, and urethra. Excretory system mainly consists about kidney, uterus, urinary bladder, and urethra. This is human excretory system. This one, kidney, this two, both are kidneys, produces urine. This is ureter, this one, transport urine. This urine is transported through this towards the urinary bladder. This is urinary bladder. This urinary bladder temporarily stores our urine. Then the urine goes downward and it then it transport out of the body. This part is called the urethra. Okay, again, this one, kidney, which produces urine. Okay, then this small line, this called ureter, which transports urine towards urinary bladder. This transports urine to urinary bladder. This urinary bladder temporarily stores our urine. Then our urine transport out of our body. Okay, जो वेस्ट हमारे बॉडी से एलिमिनेट किए जाते हैं, उस चीज को बोला जाता है एक्सक्रिएशन. किडनी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारे ब्लड के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी से एक यूरिन फॉर्म करता है. किडनी जो हमारा है, दिस फिल्टर्स
our waste product from the blood in the form of urine. जो किडनी फिल्टर करता है waste product जो हमारे blood से होते हैं उस in a form of urine. urine के form पे उस waste product को form किया जाता है. जो यूरिन कैरी करते हैं यूरिनरी ब्लडर पे बहुत थिन ट्यूब्स को, उस ट्यूब्स को बोला जाता है यूरेटर्स. दिस इज आई शोन दिस ट्यूब्स, थिन ट्यूब्स, दिस इज कॉल्ड यूरेटर. यूरिन collected from ureter and it's stored in urinary bladder, then it's excrete. जो हमारा जो यूरिन निकल जाता है जहां उस the last stage is the urethra. Skin, जो हमारा skin है, this one skin, skin is a excretory organ. It is also called excretory organ because क्यों बोला जाता है इसको excretory organ? क्योंकि ये हमारे सारे water and salt को हमारे body से निकाल देता है in a form of sweat. स्वेट मतलब पसीना. जब हम हमारे बॉडी के जो भी सॉल्ट और वाटर होते हैं ये पसीने के थ्रू सॉरी हमारे स्वेट के थ्रू ये स्किन के सहारे सारा निकाल दिया जाता है. दैट्स कॉल्ड एक्सक्रिएशन. दैट्स व्हाई इट इज एन excretory organ. So have you understand student what we just read? Okay, let's take some MCQs question. So the first question is the skull is made up of dash that join together to protect the brain. The skull is made up of how many bones? Skull is made up of, we studied before, 8 bones. Yes. The rib cage is made up of dash pair of bones. How many pair of bones? 12 pair of bones. How many type of muscles in our body? How many type of? 3 types of muscles in our body. 3 type of muscles. The backbone is made up of dash bones. How many bones? Backbone is made up of 33. 33 bones. The process of breaking down of food into simpler form is called digestion. Yes, the process of breaking down of the food into simpler form is called digestion. The brain and the spinal cord together make up the dash system. Which system? Nerves. The brain and spinal cord together make up of our brain, this, and spinal cord behind. This all together सारे मिलकर कौन सा सिस्टम तैयार करते हैं? Not nerves. Okay. The entire process of जो पूरा inhalation, that breathe in and breathe out, that breathe in, what we breathe in? Oxygen. And what we breathe out? Carbon dioxide. The entire process of inhalation and exhalation is known as, क्या बोलते हैं? Respiration process. Yes. Dash cools the body when our temperature is high. Which cools our body that temperature is high? Sweat. Sweats excrete our salt and water from the body. That's why the sweat cools the body when our temperature is high. The elimination of waste from our body is called what? Excretion. Yes, its answer is excretion. The circulatory system consists of the heart, blood, and the circulatory system of heart, blood, and blood vessels. Yes, good. Let us try this question. What is an organ system? Anybody can explain? Yes, the organ variety, a group of organs that work together in a particular function is called an organ system. What is skeleton system? Skeleton system is a system of our body. There are 206, always remember, there are 206 bones in our body that joins and it forms a skeleton system which gives our body a particular shape and support. What is spinal cord?
Spinal cord, just remember, spinal cord is just behind our body and it's a long shape and it's connect to our skull. Spinal cord is a long and thin bundle of nerve. It is, it extends from the medulla oblongata and its joint with our skull is known as spinal cord. Spinal cord helps to bend, twist, stand upward. Okay. What is respiration? The process of inhalation and the process of exhalation is called the respiration. What is inhalation? Inhalation is that which we breathe in and which we breathe in a form of oxygen and it's thrown to all our body. This is called inhalation. And what is exhalation? Exhalation is that which excrete the carbon dioxide from the body is called exhalation, and this inhalation and the exhalation process is called the respiration. What are muscles? Muscles are the throat tissues attached to the bones of our body. Muscles are attached to the bones of our body. Okay. What are excretion? What is excretion? The elimination of waste, which we eliminate fully, निकाल देते हैं हमारे जो हमारे waste, हमारे body के जो waste है उसे हम अपने body से निकाल देते हैं, उसको बोला जाता है excretion. What is nervous system? Nervous system जो हमारे brain, nervous system which controls the consist of particularly brain and spinal cord. और जो बाकी जो वाइट नेटवर्क होते हैं, वास्ट नेटवर्क होते हैं हमारे नर्व्स के, वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड किए जाते हैं. राइट अ फंक्शन ऑफ हार्ट. राइट अ फंक्शन ऑफ हार्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट pumps the blood to all parts of our body with the help of blood vessels. Blood vessels के सहारे हार्ट ब्लड को पंप करता, हार्ट ब्लड को पंप करता है और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट. राइट द फंक्शन ऑफ द लंग्स. विच लंग्स क्या करता है? लंग्स डिफ्यूज करता है ऑक्सीजन थ्रू ब्लड स्टेम इनटू द बॉडी. हमारा लंग्स हमारे ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है हमारे बॉडी स्टेम के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है. ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. इज देयर एनी डाउट? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? I can clear their doubt. Okay then we call it a day. Thank you so much. Enjoy your day. Thank you.